क्या है बिजनेस प्लान, क्या है टीम, क्या है मार्केट. Financial market, धंधा is all about भरोसा. Kite flyer, right? And why these kind of podcasts are important? देखा तो था टेराकोटा में कि wins भी हो रहे हैं, losses भी हो रहे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूँ. Essentially startups का काम यही है कि भाई you have to build something which people do not believe you for. How did that whole startup journey, building the company, building everything, वो कैसे हुआ? Just kind of you have to. भाई 119 pitch की मैंने. What? Hello everyone, welcome to the next episode of my podcast, Marketing Masala Maar. My name is Ratish and I'm the founder of the Kite Flyers. In today's episode, we are going to walk you through the journey of an economy class founder. A person who started with a normal graduation, did the more usual corporate stint, then moved into starting his own startup, making it big, selling it off and now doing it all over again. So we can very conveniently call him a serial entrepreneur. Today's episode is going to talk about his journeys, his likes, his dislikes, his failures, his fears, his anxiousness, his excitement, his success and his celebration, all encapsulated. Please welcome Manasij Ganguli. Thank you, Manasij, for joining. Lovely meeting you after many years. Same here. And it's always great to meet an old friend who's done so much from the time we left, really, to today. So congratulations on a lot of achievements that you've made, which we will talk through the day. But let me just kind of go back in the past and, get everything in perspective. So engineer by education. That's right. Followed by a reasonable stint with the corporate world. Yes. Then into your own startup. Back when startups were kind of coming up, they were buzzing, but not like today, but yes. Then selling that off and then today doing another one. Yes. Right? A lot of, a very, very eventful career, so to say. So just walk me through after engineering and how all this kind of happened. First of all, Ratish, great to be here. Yeah, and thanks for inviting me to this podcast, Marketing Masala Maar. Lovely podcast, loved your shows. Thank you. Loved your wit, which I was a big fan of when we used to work together in Impetus, I think 17 years back. Yeah. But yeah, great to be here. The journey remains very straightforward. Engineering, because that seemed to be the most logical choice for somebody who's stuck in Patna. Patna में हम सबको मालूम था कि भाई एक ही ambition है, to leave the city. अच्छा. As soon as possible. Otherwise आपको लौट के आना है यहाँ पे as a bank PO or an IAS. That's it, right? So Patna and these kind of tier 2 cities are basically factories for making sure that tier 1 cities में people like us can come. Anyway, so the quickest ticket is engineering because I was good in math and science. That's how it went. Engineering के बाद भाई you don't know much stuff. उस time पे 2002 में when I passed out engineering, TCS gave us a job which used to pay me 16,000 रुपया per month, which is radical amount of money. Wow. ठीक है यार, radical amount of money भाई. And then of course after 3 years I got terribly bored to a point where I thought I should do an MBA. अच्छा. ठीक है कि यार अब लाइफ में सोचा नहीं है MBA कर लेते हैं. ठीक है, but thankfully I did not do it and I joined Impetus, which is a product company. They make product for on those days outsourced product development बोल के एक चीज हुआ करती थी कि अंग्रेज लोग, साहब लोग, गोरे लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और हम उनके लिए सर्विसेज कर देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का सारा चीज हम बना देंगे ना. That's how it is to go. Right. I think 2.5 years there where we had a common stint and so much laughter and fun. Then of course I decided to join a company in the US. It was a deep tech startup. Like I joined as a tech guy. I ended up doing equal amount of tech and marketing and sales. और मेरे को बहुत मजा आया देख के कि स्टार्टअप में ना मतलब the square footage for you to do stuff is so high. Like if you want to get into it, it's a serious adrenaline hit यार. So that got me so excited. Like the whole 2.5 years was a tough grind, man. Like you're traveling, you're meeting people, you're competing against Oracle, IBM, losses every day, wins other days. Like it's crushing high, crushing lows, everything put together. It's a journey which is impossible to stay flat with. So when that company got sold, I decided कि यार ऐसा है कि अब ये वक्त सही है to think of something of building on my own. अच्छा. And last quick point here. For a very long period of time, I thought कि startups and धंधा बनाना is for very boring people. जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है और उनको सिर्फ पैसों से प्यार है, वो करते हैं. Right?
Now looking at a startup in the US, where you're competing against the world's best, absolute best. Oracle, IBM is like world's best, right? And you see these like 25-year-old, 30-year-old guys who, you know, really going and sticking to the man. That is like a kind of hit you cannot miss. Yeah. So that's got me to the startup world there. So that's the kind of like arc. You worked for a startup before you kind of got into a startup. I strongly recommend that, by the way. अच्छा. Yes. अच्छा. So 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी रिकमेंडेशन पे लोगों ने अमल कर लिया और कोई ऐसा आदमी है. अब जब आप स्टार्टअप में रहते हो तो आप काफ़ी कुछ देख लेते हो, यू नो, इन टर्म्स ऑफ आप इन्वॉल्व भी हर चीज़ में होते हो, यू आर डीलिंग विद फाइनेंस एवरीथिंग. सो व्हेन यू वेंट टू योर ओन स्टार्टअप, बट देयर आर स्टिल सम एरियाज व्हिच probably were not as explored. Or let me kind of change that question. When working into a startup for so many years, then you started your own, was there a surprise for you? If you're not a founder, or at least you're not the first, like, you know, the umbilical membership group of the startup, you don't have to be a founder by the way. Like, this is a misnomer. You can realize a startup's life very quickly if you're a very, very core umbilical member. वो देखना और बाहर से देखने में बहुत फर्क है, और अपना खुद जीना, लाइक स्पेक्टेटर स्पोर्ट एक है और एक है वो गेम फेस करना, राइट? बहुत डिफरेंसेस, बहुत सरप्राइजेस हैं. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग्स इन दैट, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन पर्सनली थिंक is it's actually a emotional training that happens. Ki see, if I'm in a job, I'm guaranteed X, you know, every month. It is kind of okay, right? कि ठीक है यार, wins हो रहे हैं, losses हो रहे हैं, but my X is guaranteed. Correct. But as an entrepreneur, ना, that has a direct relation to your emotional, personal, your sort of societal well-being around it. So, what training is a very big part of the whole thing, which I would never understood if I had not done it myself. So that's the big surprise. कि अच्छा, मैंने देखा तो था टेराकोटा में कि विंस भी हो रहे हैं, लॉसेस भी हो रहे हैं, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ, बट वो जीना एकदम अलग चीज है. Like, to be able to take every day on your own chest is harder. That's the training that actually goes through as a part of our life as a startup founders. So you worked with TCS, आपने जैसे बताया, है ना? Then उसके बाद you worked with Impetus, which is another, it was a growing company. It wasn't really a startup, nor was it an enterprise at that somewhere time. in the somewhere middle. in between. Reasonable sized. Then you moved to a pure startup. Yes. वो सब भी आपने किया. That startup got sold at a good thing, and I'm sure you must have got a lot of money there. But इस पूरे दौरान आपको what was that trigger जो आपको लगा कि बस यार, अब जो है अब कर लेना चाहिए, इसीलिए क्योंकि देख लिया कि अरे एक आदमी तो मिलियनेयर बन गया है. बस आप ढूंढ रहे हो एक फिल्म की कहानी कि कब्रिस्तान में आंधी के बीच में मैंने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख कसम खाया कि ऐसा नहीं था. अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. There was no trigger point? नहीं, I don't think it was more of like a journey towards getting there. कि भाई ठीक है, स्टार्टअप ज्वाइन किया मैंने यूएस में एज अ वेरी अर्ली एम्प्लॉय. फ्रॉम देयर टू reconciling with my own thought कि स्टार्टअप्स वो करते हैं जो कि बेवकूफ होते हैं, जिनकी जिंदगी में पैसा के अलावा कुछ नहीं होता है, और वो बहुत बोरिंग लोग होते हैं. And I always thought कि I'm not that guy, by the way. Why not have the first person bias? So from there to getting to building your own startup, there are lots of like smaller steps. There is no dramatic point कि भाई इसके बाद ये कर लेना चाहिए. But I'll tell you the dramatic part actually happened in the second one. अच्छा, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टअप बनाया मैंने, आपने बोला इट इज सुपरबली सक्सेसफुल. आई वुड से इट्स मॉडरेटली सक्सेसफुल. वी सोल्ड फॉर अ वेरी स्मॉल 100 crore रुपीस. ठीक है, जो कि स्टार्टअप की दुनिया में बहुत छोटा सा पैसा है. क्या बात है. हाँ सर, 100 crore is a big money, but in the startup world it's like ठीक है, मतलब तुम्हारा एक पान का दुकान है साइड में, नॉट बैड. ठीक है, तुम्हारे यहाँ चॉकलेट पान मिलता है, ऐसा होगा. ठीक है, so that's how it goes. But I remember being in the lap of luxury after I sold to the company in the UK. It's a $1 billion company. They're flying you business class. कभी गलती से first class में bed हो गया. वाह. And I meet this founder in Munich airport who is whipping up his code on his laptop, and I am thinking कि मैं कौन सा film देखूंगा आज यार. ठीक है. And then I had a lovely champagne का meal और ये lobster और सब आया. Then I come out and see in the economy class कि सारे lights बंद हैं, और वो बंदा अभी भी लैपटॉप पे लगा हुआ है, काम कर रहा है. And I stood there with my brandy in my hand. ठीक है सर, कि यार कहाँ आ गए यार हम, मतलब in a good way, in a very bad way. कहाँ आ गए यार. I am that guy. ठीक है, this guy is fighting for leg room in the economy seat.
इसकी वाट लगी पड़ी है कि पैसा कहाँ से आएगा, इसके 2 कस्टमर छोड़ने वाले हैं इसको अपने आप पे यकीन है, पर वो अभी भी रात को 3 बजे बैठ के, जब सब लोग फिल्में देख रहे हैं या सो चुके हैं प्लेन में, वो अपना काम कर रहा है यार। और मैं आई एम हैविंग दिस ब्यूटीफुल ब्रांडी का ग्लास इन माय हैंड एंड आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम लाइक आई नीड टू बी देयर डूड। वो मैं हूँ। तो मेरी दूसरी साइड की कहानी ना, जो आप ढूंढ रहे वो है, ठीक है। पहली वाली बस मोर लाइक ग्रेजुअल वहां पहुंचे, क्योंकि मेरे को लगता है कि लॉजिकल चॉइस है। मैंने एक स्टार्टअप देखा है टेराकोटा यूएस में, मैं शायद बना सकता हूँ, आई कैन बिल्ड इट। सेकेंड वन वाज द डिस्पिकेबल पार्ट ऑफ बीइंग इनएक्टिविटी इन लग्जरी, अच्छा, which I thought was going to kill me and make me an absolutely stupid person, जिसके साथ रतीश तो कोई बात नहीं करेगा। अरे नहीं That's how it is. So भाई that was the mode in that place. Okay. अभी एक बार वापस चलते हैं पहले वाले पे, because I think second जो है उसमें पहले से काफ़ी लर्निंग आपने ली होगी जो अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बिल्कुल। एंड उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले वाले पे आते हैं। सो जब पहले वाला आप स्टार्ट करने लगे एंड जो यू वर वर्किंग, योर प्रोडक्ट वाज बेसिकली फॉर द अपैरल इंडस्ट्री, जिसमें कपड़ों का वेस्टेज जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्या बात है सर, होमवर्क करके आए हो पूरा है ना। और उसको जो है आई थिंक इट reducing that can reduce the total cost by about 30% or something like that. Big impact. ऐसा ही कुछ था, correct? So I know your wife was in the fashion industry and that's where the maybe the insight came in. It is not maybe, absolutely. अच्छा, so जब आपने वो start किया तो आप what was it going, I mean how was it in your head कि अब मेरे को system कैसे, मतलब how did that whole startup journey, मेरे से building the company, building everything, वो कैसे हुआ? Just kind of you have to summarize it in a way. Quick pointers तो ये है कि भाई हमने एक पुस्तक लिखी है, हाँ भाई आपको पता होगा। बिल्कुल। The book is called The Economic Class Founder. Yes. If you buy the book, Ratish, I'll make 27 rupees 10 paise, which is life changing money for me. अच्छा, ठीक है, तो please buy the book and read it. Of course. But since you asked the question and I'm indebted with the coffee that you've given me, yes. I have to answer it, right? Yes. या देखो 3 चीजें important थी, right? एक है प्रोडक्ट बनाना, एक है people, और एक है process. Correct. There are 3 things. If you make these 3 things, hopefully you will get somewhere, right? Building the product was purely Mosby's insight and a segue here, दर्शकों, Mosby को मैं मिला 19 अगस्त 1996 में, जब मैं 11th में क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे को कॉलेज में भेजा और आई डिसाइड कि बहुत पढ़ाई कर ली, प्यार कर लेते हैं। सो आई मेट मॉस्बी, शी वाज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड माय फर्स्ट वाइफ इवन टुडे, ठीक है। सो शी वेंट टू निफ्ट एंड शी हैड ऑल दिस idea about this, apparel tech and stuff, while I was doing the work in terracotta, traveling the first world. Mosby was traveling in Indonesia, Vietnam, China, Thailand, Malaysia, more interesting countries. And learning about the apparel industry, कि भाई कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कितना highly, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत कम है। So she had this like insight and the whole mathematical insight about the whole thing. Then of course me and my friends, because we are हमारे पास कोई स्किल तो है नहीं, इंजीनियर है ना, तो ठीक है, वो भी टेक मतलब कंप्यूटर इंजीनियर था, हमारा कोई स्किल नहीं है भाई। सो वी टुक हर आइडिया एंड वी बिल्ट अ एमवीपी अराउंड इट कि भाई क्या लोग ये खरीदेंगे, राइट? एंड देन वी वेंट टू दिस लार्ज कंपनीज, मधुरा, अरविंद, रेमंड, कि भाई क्या तुम लोगे कि नहीं लोगे? एंड देन इट सीम्ड दैट वी कुड एब्सोल्युटली स्टैंड एंड शो देम वैल्यू। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज़ अदरवाइज वी विल अननेसेसरली गो इनटू डिटेल्स व्हिच नोबडी वांट्स टू हियर, ठीक है? दैट्स द प्रोडक्ट। सेकंड इज the people. Now we did not have money. हमारे पास बहुत धन तो था नहीं भाई, तो we hired a lot of freshers, who were themselves very very entrepreneurial nature. So that was my first point of hiring कि skill को किस बेस पे हायर नहीं करते हैं, let's hire people who are really passionate. तो ये हो गया का people building. Third is very importantly process building, like repeatability बनाना ना, कि भाई आपने एक चीज समझ लिया, अब इसको 10 लोगों में कैसे disseminate करना है। It is a harder thing. It's a cultural communication. And I always keep saying, culture is not something that's tacit. Culture has to be very clearly mentioned, often repeated, and often demonstrated. That becomes your framework of interpersonal communication and all the transactions that happen in an organization. That is your culture. That building is a part. ये 3 चीजें build करनी पड़ेंगी सर आपको, और इसमें लगता है बहुत वक्त, और हमारे पास सतीश इतना वक्त तो नहीं है कि हम इस वार्तालाप के बीच में ये सॉल्व कर सकें। But I think these are the 3 top areas where we really worked hard to get stuff done. So जब आप
these three things that you mentioned, and I also remember back then we were obviously connected on LinkedIn, so I vividly remember few of your posts that you had put together. उनमें से एक थी जिसमें आपने ऐसा कुछ कहा था कि startups are not about fancy gaming areas, bean bags and this and that, but it is about hard work and this and that. और जो image थी वो एक ऐसे ग्लास का पैनल पेन सा था जिसके पीछे आप लोग बैठे हुए थे और बड़ा रॉ सा सेटअप था. स्टार्टअप्स ऑल्सो कम विद अ लॉट ऑफ ग्लैमर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशनिंग, अगर आप देखो तो, है ना. रियलिटी में वो ग्लैमर और रियलिटी में कितना फ़र्क है, या कितना टाइम लगता है, या कभी आप वहाँ उस तरीके से पहुँच पाते हो, या कि सेटअप रॉ ही होता है सर. शुरू में ना आपके पास पैसे नहीं होते, पीपल डोंट हैव मनी, you don't have belief from anybody, market, employees, investors. Nobody believes you because why would you believe कि भाई आज तक जो चीज नहीं की जा सकी है, आप कौन है भाई जो कल आके चेंज कर देंगे. वो भी आपके पास ना कोई फंडिंग है, ना आपका कोई पेडिग्री है, ना ही आप IIT से हैं, जैसे कि मेरे साथ था. भाई आई एम इंजीनियर फ्रॉम BIT मसला, नहीं कर पाए थे IIT, भाई गलती हो गई, प्यार में पड़ गया, कैसे करते हैं. If there is no belief in the system, your job is to walk up to the point where you build that belief. Now, where would you spend your money? Would you spend your money in amazing interiors? And no, you will spend your money like your life depends on it, dude. तो उस टाइम पे तुम्हारा पैसा वहीं पे जाएगा ना, जो कि एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है. राइट. तो मतलब हम लोग तो ये हालांकि एक्स्ट्रा ग्लैमराइज्ड है स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्यू पीपल हु हैव बिकम सर्वाइवर्स, दे गिव यू टिप्स ऑफ थिंग्स विच इज वेरी वेरी कॉन्टेक्चुअल. भाई हर जर्नी अलग अलग है यार. एक्स्ट्रा ग्लैमराइज तो है. राइट. एसेंशियली स्टार्टअप्स का काम यही है कि भाई यू हैव टू बिल्ड समथिंग विच पीपल डू नॉट बिलीव यू फॉर. दैट्स हाउ इट इज. तो बट आजकल जैसे हम देखते हैं तो हमारी मार्केटिंग लैंग्वेज में उसे कहा जाता है मी टू ब्रांड्स, कि आप ये करते हो तो हम भी ये कर लेते हैं, उसको थोड़ा बेहतर कर लेंगे. जैसे क्लासिक एग्जांपल है पेटीएम, फोन पे, भारत पे, ये वो सब मतलब एक वक्त ओरिजिनल कॉपीज हैं. ओरिजिनल कॉपीज हैं, करेक्ट, वेरी राइट. इफ दैट्स अ वर्ड, ओरिजिनल भी कॉपी भी है. तो बिल्कुल करेक्ट है. सो ये भी बहुत हो रहा है एंड दे आर स्टिल गेटिंग फंडिंग एंड एवरीथिंग. तो ये जो ओरिजिनलिटी वाली बात अभी आपने करी कि भाई जो आज तक सॉल्व नहीं हुई तुम कैसे कर लोगे, तो अभी ओरिजिनलिटी तो है नहीं. अब मुश्किल है टेक्निकली, राइट. हाँ, मुश्किल है. तो क्या स्टार्टअप जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें क्या उनका भी अप्रोच थोड़ा ऐसे इनोवेशन से हट के इमिटेशन भी है तो ठीक है पे चला गया है? यार देखो ये हमेशा रहेगा. ठीक है. अगर कोई चीज कामयाब होती है, if something becomes successful, that becomes sort of like a template for people to follow. So, and there is no problem in making original copies which is inspired and well structured for the climate you are following. एकदम sorted है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. Well proven business plan है. इसमें आपको business idea prove नहीं करना पड़ता. कि अगर मैंने कहा कि यार Airbnb चलता है, मैं Airbnb का हिंदुस्तानी संस्करण बना रहा हूँ, संस्कारी BNB, तो भाई क्लियर है कि Airbnb का बिजनेस मॉडल चलता है. वो डिस्प्यूटेड नहीं है आज के डेट में. अब डिस्प्यूट ये है कि क्या ये संस्कारी मॉडल यहाँ चल पाएगा. दैट्स द ओनली क्वेश्चन, राइट. तो आपका एक साइड का जो बैटल है कम हो गया. ठीक. अगर आपको फंडिंग चाहिए, बिकॉज आपने इन्वेस्टर्स का पॉइंट बोला, देखिए VCs का गेम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दे आर इन्वेस्टिंग इनटू यू नॉट फॉर गेटिंग 8% का FD रिटर्न, राइट. दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपसे 100x का उम्मीद है मुझे. तो मैंने 100 कंपनीज में 100x पैसा बनाने की डाल रखा है. उसमें से 50 कंपनियों की मौत हो जाएगी, 20 कंपनियां 1x लौटाएंगी, 20 कंपनियां 2x लौटाएंगी, 20 कंपनियां 3x लौटाएंगी, 3x, और शायद एक या दो कंपनी मुझे 300x लौटा देगी. तो मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो मैंने गेम खेले, मेरा ओवरऑल पैसा बन गया. इसके बेस पे आई विल रेज माय नेक्स्ट फंड्स. सो नाउ फॉर देम दे हैव टू लुक एट 3-4 वेरी क्लियर थिंग्स. क्या है बिजनेस प्लान, क्या है टीम, क्या है मार्केट. ठीक है. अगर आपका बिजनेस प्लान ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि Airbnb स्ट्रक्चर्ड है, प्रूवन है, तो उसका संस्कारी BNB इज अ प्रूवन. द थर्ड पार्ट ऑफ कोर्स इज कि इन सब के ऊपर जो मार्केट डायनामिक्स है वो कैसा बैठेगा. तो ये सब लेके आपको VCs डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. तो उनके लिए एक्चुअली ये फर्क नहीं पड़ता है कि इमिटेशन है कि नहीं है, राइट. इवन दो VCs डू हार्प ऑन डिफरेंशिएशंस अ लॉट, and I always keep saying as a joke कि यार देखो VCs will ask for differentiations, customers don't care, customers want integration. The point is imitation is not a problem. To be very clear, it's not a problem, right? And actually imitation makes your job easier. So that's how it goes. I would always think that the best cases that we have seen
like really outsized success we have seen are not for people who are serious trailblazers कि जिन्होंने जाके पहली बार जाके झंडा गाड़ा है, ऐसा नहीं है. Actually वो वाले लोग बेटर करते हैं जो लोग पहले वाले जनता को जाने देते हैं. And then the next guy can, you know, like learn from their mistakes and then build from there. This is always the case, by the way. So no problem with imitation, no problem with reinventing the processes a little bit, making delta changes. Those delta changes will compound over a period of time, sir, and will deliver a very great result. No problem. Understood. तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे अभी आपने बताया कि ड्यूरिंग योर स्टार्टअप जर्नी, फर्स्ट स्टार्टअप मैं पूछता हूँ, there were 3 times when you were closer to the grave in terms of as a business, as you mentioned, है ना? And then you had your moments, high, low, वगैरह वगैरह, सब कर लिया, पूरा सर्कल घुमा दिया, मतलब स्टार्ट किया, बनाया, बेचा, पैसे बनाए, बाहर आ गए. अब कोई भी समझदार आदमी यही काम है ना, मतलब यही दोबारा नहीं करेगा, मतलब ऐसा. Thank you very much for saying कि आप समझदार नहीं है. नहीं, मैं ही जानना चाहता हूँ कि इस समझदारी के ऊपर की जो समझदारी है, अच्छा ऊपर, वो मैं समझना चाहता हूँ कि why and what made you think और believe कि यार let's grind again. And another point that I want to bring in कि जब आपने अपना पहला स्टार्टअप किया था तो आप आज से शायद 10 साल पहले थे, तब एंथुसियाज्म ज्यादा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, उम्र कम होती है, थ्रिल ज्यादा मिलता है वगैरह वगैरह. अब शायद चीजें बहुत अलग हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपनी हेल्थ वगैरह वगैरह, बहुत बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना? तो ये सब देखते हुए फिर मुरारी बेलतल क्यों भाई? Why is my देखो भाई, बहुत डिफरेंस है 10 साल में मेरे पिछले वजूद में एज एन एंटरप्रेन्योर और आज की वजूद में जो एंटरप्रेन्योर, बहुत डिफरेंस है. ठीक है भाई, उस जमाने में हम स्पार्क में आया करते थे, अब वो जमाना रहा नहीं, राइट? सर देखिए, पहला पॉइंट है कि व्हाई वुड यू डू इट अगेन, राइट? वो टीवीएफ पिक्चर्स की एक सीरीज, उसमें बोलता है बंदा कि यार एंटरप्रेन्योर की आत्मा ना बड़ी बेचैन होती है. वो ना तब तक बेचैन रहती है जब तक ना वो एक मास्टरपीस नहीं बना ले. ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई थॉट दैट सी लास्ट स्टार्टअप का आइडिया came from Osmi. She thought it's a $1 billion problem to solve. इस स्टार्टअप का आइडिया हमको पिछले स्टार्टअप में ही आ गया था. Just tell a little about this also. हाँ, so this one is basically थोड़ा बोरिंग है. आपके इस मसाला मार के वाले मार्केटिंग में बड़ा खराब लगेगा, स्वाद खराब हो जाएगा. नहीं, अरे थोड़ा तो बताओ. आपने पूछ लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ इसका. देखिए, तो हम B2B SaaS के लिए काम करते हैं. SaaS का मतलब होता है कि भाई आप सॉफ्टवेयर खरीदते नहीं है सीडी से, आप सॉफ्टवेयर के लिए महीने का कुछ पे करते हैं. तो how it goes, right? अब अगर आप एक B2B SaaS प्रोवाइडर हैं कि आपकी कंपनी है और कस्टमर्स आपके हैं, आप चाहेंगे कि कस्टमर कभी छोड़ के नहीं जाए आपको, क्योंकि वो हर महीने या हर कुछ पैसे देता है, नेटफ्लिक्स के जैसे. नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, बट हाँ एक ही जैसा है, ठीक है, समझने के लिए सही है. हम क्या करते हैं, हम आपके और आपके कस्टमर के बीच में बैठते हैं और हम आपके कस्टमर का सारा डेटा देके बैठते हैं कि भाई ये ना जाने वाला है तुम्हारे हाथ से. Right, that there is a lot of modeling things that we learned. So I'm going to like completely like gloss over it and say कि कुछ तो हम AI से जादू करते हैं. AI नहीं है, मशीन लर्निंग है. 2 अलग-अलग चीजें मित्रों, कभी भी इसको आपस में कंफ्यूज ना करें. और एक सांस में बोल देते हैं लोग, बट ऐसा है नहीं. ऐसा नहीं है, ठीक है. तो very clearly, तो so that's what we're doing right now. And going back to your question, because your question was 2-part question. I'm still in my mind, by the way. ठीक है. Why startup again is because हमको उसका आइडिया तब आ गया. ZapScale का आइडिया हमको थ्रेडसॉल्व में बैठे बैठे आ गया था कि ये वाला पीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करना चाहिए, तो हम वो सॉल्व कर रहे हैं. तो वो प्रॉब्लम दिख गई थी. और एक फायदा रतीश भाई ये है कि अगर आपने एक बार सिल्वर जुबली डाल दिया ना, तो लगता है लोगों को कि इस बार गोल्ड जुबली करेगा यार. तो भाई पिछले लास्ट स्टार्टअप में थ्रेडसॉल्व में 1 करोड़ की सीड फंडिंग उठाने के लिए भाई साहब जो मुजरा किया ना मैंने बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली का कोई पिन कोड नहीं है जहां पे मैंने एक्चुअली प्रॉपर गजा लगा के डांस नहीं किया सर कि दे दो पैसे प्लीज, मेरा धंधा अच्छा बनेगा यार. बड़ी मुश्किल से वो 1 करोड़ मिला, फिर फंडिंग हुई, फिर नारायण मूर्ति ने फंडिंग डाली, फिर धंधा आगे बढ़ा, 20 मुल्कों में पहुंचे, फिर बेच दिया, जो भी हो. इस बार सर चूंकि आपने पिछले बार लोगों को पैसा बना के दिया, नारायण मूर्ति जी को दिया, नॉट दैट ही नीडेड मनी फ्रॉम मी टू गेट रिच एनी व्हिच वे, ठीक है. उनके तो वो भरोसे का रिवॉर्ड है वो बेसिकली. भाई ऑफ कोर्स, एंड इज अ ग्रेट पर्सन, फन पर्सन टू मीट विद. एनीवे, तो भाई हुआ ये कि इस बार जब आप पैसे उठाने के लिए पहुंचे मार्केट में,
आपकी सिल्वर जुबली को देख के लोगों ने आपको 4 मिलियन दिया पीपीटी पे कि भरोसा सर फाइनेंशियल मार्केट धंधा इज ऑल अबाउट भरोसा एब्सोल्युटली if you are able to generate belief then you will be able to generate. I mean, I am a small founder, so I can generate belief up to $4 million. There are bigger founders जिनकी बारे में बात कर रहे थे, they can generate billions of dollars of भरोसा. They're doing it that way. Right. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यों किया. अब आपका सवाल आता है कि भाई 10 साल में तुम्हारे में personally बहुत फर्क आ गया. You must have become a little tired, a little jaded. You know, you are not wrong there. I mean, if I say कि I have the same amount of passion, hunger, energy, zeal, नहीं है exactly वैसा, difference है. So I work less now. I also want my team to work less. Not that I have less passion or energy. I know that I don't need to show it all the time. Correct. Like it's like, you know, it's like you don't have a girlfriend, you are always trying to find one. Another one you have and you're chilled in your life, so you don't have to constantly think about it. Right. The back of the mind still there. But we don't have to, right? This is how it goes. तो difference ये है. I think experience also, जैसे कहते हैं कि वो थोड़ा शायद ठहराव ज़्यादा ले आता है. आपको पता है, you've done it once, so you know it's doable. तो वो थोड़ी जो नहीं doable का पता नहीं है, but anxiety कम होती होगी, anxiousness anxiety, आपका जो हाथ पाँव फूलता था ना पहले, like I would remember being terrified. And having that emotional roller coaster, I don't go through that as much. I am more like I can attenuate that thing pretty much and control those things better because again, you know, having seen it for 10 years, I think ये acceptable है, ऐसा ही होना चाहिए. See, everything is falling apart. I always keep thinking, भाई कैसे हो? तो I always say this, कि यार I am chewing glass every day. I am all bloody from inside. अंदर से बिल्कुल खून है बिल्कुल. But I am smiling from outside because ये regular Saturday है मेरे लिए. ये हर दिन ऐसा ही होता है. कोई बड़ी बात नहीं. But now you get to know it. It's just like that experience come from there. That's all. तो funding then and funding now, other than the, let's take that success bit out of the equation, the moderate success as you called it. Yeah, moderate. उसको बाहर से उसमें equation से हटा देते हैं. Meeting a VC then, meeting a VC now. Asking for funding then, asking for funding now. What has changed in their approach when they look at? Difference ये है सर कि इस 10 साल में ये हुआ है कि the share of Indian money in the market has gone up. Even though not significantly, but still has gone up. इसका दो difference हुआ है. इसका difference ये हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने startups बना के बेचे हैं, वो लोग operator से VC बने हैं. तो they have a much better sense of empathizing with operator founders. So now when I meet VCs, a lot of VCs are very empathetic compared to what they were 10 years back. Two things. One, they have done their own circuits. अगर आपने खुद जिंदगी जी है तो आप शायद उसकी तकलीफ थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे. Correct. सोचता हूँ मैं ऐसा नहीं, absolutely. हालांकि मर्सिडीज में बैठकर रोना मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा कोई नहीं, राइट. तो ये एक चेंज दिखता है मेरे को. सेकेंड चीज जो मुझे दिखता है वो ये है कि अभी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट एंड अ बिजनेस शुड बी इज मच मोर एडवांस्ड देन व्हाट इट वाज 10 years बैक. 10 साल पहले यार रतीश हम लोग SaaS बेच रहे थे, AI बेच रहे थे, और उस जमाने में हिंदुस्तान में ऐप बनते थे, तो हमको VCs बोलते थे कि ऐप बनाओ. ठीक है, अब तो SaaS और AI वगैरह कॉमन प्लेस है, तो हम हमेशा गलत समय पे रहे हैं. ठीक है, in a backhand way said I'm a visionary. ठीक है, बिल्कुल, with moderate success. तो फर्क आ गया है. Do I think that it is completely in an amazing space? No, I think one more cycle has to happen. See, more cycles happen where people operate, finish, and then go back, and then they produce the whole. This is like cricket, ना सर. आप देखो, अगर क्रिकेटर्स हैं वो खुद ही क्रिकेट खेल के फिर बाद में जाके एडमिनिस्ट्रेटर बन के क्रिकेट सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, तो आपका ओवरऑल ढांचा मजबूत होगा, है ना सर. ये हर जगह पे है, राइट. ये इस इंडस्ट्री में होने लग गया है. सो आई वुड से दैट इंडियाज इकोसिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, बट हैविंग सेड दैट वी आर 30 years behind what US is. So it will take the natural progression of running this cycle of operators making money going back into VCs and stuff like that. मतलब बनने वाले हो आप? I don't know. अभी ये इसको पर डुबाते हैं फिर सोचते हैं. अच्छा, टेल मी समथिंग. मेरा बड़ा मैं क्यूरियस था इस चीज को लेके. हाउ मेनी पिचेस डिड यू एक्चुअली मेक माइनस दिस वन? नहीं, ये पिच तो बहुत याद है, यादगार पिच है इसको लेके. यार फिर से मैं बुक
हाँ नहीं बुक बिल्कुल बुक 27 रुपए वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. मैं बिल्कुल करूँगा उसको. भाई 119 पिच किए मैंने. What? 119. A total pitches done all over India was 119 pitches. After which you got your first round of funding. 1 करोड़ की फंडिंग मांग रहा था सर मैं, जिसके लिए मुझे 119 जगह से रिजेक्शन मिला. ठीक है, एंड इट इज़ ब्रूटल. मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि हम लोग शायद 2 रिजेक्शंस में या 3 में जब इंटरव्यू दे रहे होते थे नौकरी के दौरान, जब एक वक्त आता है कि आप कहते हो मेरे को नौकरी चाहिए और आप 3 इंटरव्यू देते हो, 3 में सिलेक्ट नहीं होते, तो आपको लगता है कि या तो मैं पागल हूँ या मेरी पढ़ाई बेकार है या मेरी करंट रोल में बिल्कुल ही निखत हो चुका हूँ वगैरह वगैरह. निखत हो चुका हूँ. आप 119 बार जब ये हो रहा था तो आई मीन व्हाट वाज गोइंग थ्रू, आई मीन मस्ट बी वेरी डिमोरलाइजिंग, ब्रेकिंग. इट इज डिमोरलाइजिंग. आई कैन नॉट से कि बहुत मजा आया मेरे को. बिल्कुल नहीं यार, बहुत टफ था. लाइक टू बी कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रीटेड लाइक क्रैप इज हार्ड, right? And I can tell you that a lot of people who are in corporate and they spend years living in a lovely cocoon. आपको challenges life में ये होता है कि board room में आपके manager ने बोला कि ये आइडिया अच्छा नहीं है. That's the maximum amount of challenge that you can face कि personal relation हो गया यार. In a startup where you are trying to pitch your product, your idea to your customers or your VCs, rejection is the rule. अच्छा. ठीक है, acceptance is the exception. Now, if you're not trained for this, then you have no business getting into this. Because most of the time, you will be flatly, outrightly, brutally said no to, on your face. This Narayan Murthy was one of my investors, right? He actually had his first dhanda, like with the first product he wrote, was for apparel industry. He said this to me when I met him. So you have to find someone like this. तो वो करते रहना पड़ेगा आपको. I do not see any other way but to keep like banging your head on the wall. The wall will never give way, by the way. मैं नहीं कहता कि दीवार टूट जाएगी, लेकिन शायद आपको सर मारते देखते किसी को दया आ जाए. बहुत देर से कर रहा है. It's not for the faint-hearted. It is not for the faint-hearted. That is for sure. So now let me kind of extend this a little further. You mentioned about Mr. Narayan Murthy, legendary person. Figure, absolutely. Tell me a little bit about, because he was one of the investors. Tell me, how was it meeting with him and कैसा रहा? Yeah, Narayan Murthy के साथ 3 मीटिंग हुई हमारी for the funding etc. First meeting I was psyched up by the Narayan Murthy के चिलंटूस. अच्छा. भाई नारायण मूर्ति से मिलने आ रहे हो, लाइफ चेंज जाएगी, अच्छे कपड़े पहन के आना, शॉर्ट्स में बताना. ठीक है, आपने नहीं बोला पर उन्होंने बोला. मैं तो भाई बड़े नए कपड़े सिलवा के पहुंचा, भाई नए हमसे मिलने जा रहे हैं. उनके घर में उस दिन कुछ तो काम हो रहा, सुअर काम चल रहा था. ठीक है, एंड आई वाज लुकिंग एट अ फोन कि अरे यार चाइना में इस फैक्ट्री ने को ना बोल दिया. ओह. तो यार मैं फोन देखते ना, आई फेल इन द सुअर. ठीक है, नए कपड़ों में. हाँ, नए कपड़ों में. तो सारे कपड़े फट उठ गए मेरे. ठीक है, और पैर कटा बहुत बुरी तरह से. तो यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं. तो मैं नारायण मूर्ति को मिलेगा शॉर्ट्स और टी शर्ट में. फटे कपड़े का नहीं सकते ना, फटे उसमें दुनिया भर की चीज लगा हुआ है यार, कैसे सकते हैं. So I went to meet him in shorts. He obviously did not worry about that too much. So it was a good fun meeting, and so I meet, I go up and say hi, I'm Manasij. He says yes, I am Narayan Murthy. Sir, हमको तो मालूम ही है, हमको तो मालूम ही है. So but good conversation. And again, because he has been an operator himself now, somebody who has gone through the whole grind and stuff himself, so he understands that piece. I think he meets a bunch of entrepreneurs himself. So therefore, that was a good, fun meeting. That second, my another meeting I remember with Narayan Murthy when I wrote my book, and I decided to go and meet him and present him the book and stuff. तो नारायण मूर्ति के जितने भी भाई लोग थे, उन्होंने बोला कि देखो यार, ठीक है, don't make any jokes. And to me that's like यार अगर माहौल आएगा तो बोल देंगे ना यार. मतलब I cannot unfortunately stop that from happening. Right? It is a situational inspiration. Correct. ठीक है जी. Okay, so we go in, we meet, we sit down, I give him the book. He looks at the book and says, so what is the सार तत्व of this book? अरे वाह. What is the essence of essence? This book? क्या है इस book? So I said, don't make a startup in apparel. ठीक है. Now all the chilantus are like, they just immediately held their breath कि मैंने मना किया था और शुरू किया जोक से इसने.
Narayan Murthy took a second and then he laughed. And then Chilantus laughed harder. Wow, किस तरह से? Must be good. So not bad. Yeah, it was a good fun experience. Again, see, I do not over the years, brother Ratish, I do not think that we should over-index on some people like Narayan Murthy or Mohandas Pai, ABC, whatever it is, right? These people have done something great in their lives and times. No worries about that. Full credit to that, given to that. But an entrepreneur has this killer instinct कि मैं भी कुछ हूँ यार. Great. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ. मैं कई बार, because we also meet a lot of startups also and companies who are not really funded, but in a startup phase, and meet them for marketing purposes, etc. So there are two school of thoughts, right? जैसे आपने अभी अपनी conversation में थोड़ा टाइम पहले बोला कि यार मेरे पास उतने ही पैसे हैं, तो अब मेरे को वो पैसे कहाँ लगाने हैं, I have to be very wise about it. Yes. Correct? There is another school of thought which says कि यार पैसे लगाओ स्टार्टअप में, अगर दिखेगा तभी तो बिकेगा, नहीं तो कैसे होगा. ठीक. कुछ लोग ये बोलते हैं यार हमारा बजट बड़ा कम है, आप बिल्कुल लिमिटेड मार्केटिंग कर दो जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार लगाओ यार. अगेन इंडस्ट्री का फर्क है, सब कुछ है, वो आई गेट. वो नुआंस है, बट ठीक है. हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ क्रिटिकल और वेयर शुड अ स्टार्टअप और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे शुड लुक एट मार्केटिंग फॉर देम as a cost center, as a game changer, what according to you? It's a very very good question यार. इसलिए ये सवाल इससे इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि there is over indexed focus on building innovations. But बस आपके गराज में बना हुआ इनोवेशन लोगों के हाथ तक पहुंचेगा कैसे? You have to build a distribution for it. You like it or not. And distribution over the years, Ratish, is getting more and more expensive. Now, of course, you can try your own ways. Correct. Or you can be humble about it, saying, "Yeah, I do not know enough. Therefore, I need to find somebody who will help me with the process." And there is no shame in that, actually, right? The superhuman aura of a founder who knows everything, all-knowing, omnipotent, omniscient. भाई भगवान थोड़े हैं आप, है ना? It's important to therefore spend the money on marketing. And again, it has become more relevant in the current context because it has become more expensive. So therefore, if you have less number of dollars, rupees, yen, cent, whatever you have in your hand, right? Where do you put it to get the most amount of bang for it? Again, it's contextual to the business you are, how much money you have, who are your competitors, which geographies, everything, right? Having said that once, I think because this distribution building is getting more expensive, it is therefore more important to have a good marketing partner. We use a lot of marketing systems. I've always just believed that you have to build that inbound engine and an outbound engine both, which almost all good founders relate to. Inbound engines are more time taking, but they are more endearing. In the sense कि वो आपको long term तक delivery देंगे आपको leads की, prospects की. Correct. Outbound is quicker. More like point in time, tactical. Correct. Right. But there is this yin and yang has to be balanced very well. कि आप कैसे करेंगे? आपके specific space में आपको Google ads करना चाहिए, LinkedIn ads करना चाहिए, आपको events करने चाहिए, आपको G2, Gartner, Forrester के साथ partner करना चाहिए, आपको influence के साथ marketing करनी चाहिए, आपको ऐसे podcast बनाना चाहिए, है ना sir? There are a lot of things, right? Correct. Which one would be the best for you? I think, which is why I think, Ratish, you guys have a space. Which is why companies like the Kite Flyer, right, and why these kind of podcasts are important is because it allows people to see that you are here to solve their problem. And you are here to empathize a lot. Like you're listening so much from me, which tells me that you want to understand the problem before you give solutions. So I think this is very important, and I would think that you guys should definitely, like speak to more and more founders. Again, startups may not have all the money, but if you can deliver one or two successes for some of these people, then your story will build up, dude. That's how it goes. Absolutely. But please, do not over-index on only building the product. Distribution plus product is the real game. So don't play one half and then claim victory. Yeah, true. Perfect. Thank you. I think that was very, very insightful because I always kind of get into this conversation with a lot of people. But मैं देखता हूँ घूम फिर के कहानी बजट पे पहुँच जाती है, तो ठीक है, मतलब I think budget is important. evolution हर चीज़ का होता है, होगा. Yes.
So, Manasij, thank you. I think we are at the last part of... Really? Yeah. It was a great conversation. मुझे भी पता नहीं लगा. But since, as you have mentioned it a couple of times, the name of the podcast is Marketing Masala Maar के, तो एक मसालेदार question मैं last में पूछता हूँ अपने guest से. Because there has been so much of action in your life in general, this question will be slightly deeper for you. Normally ये बहुत frivolous होता है. Normally, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा अलग है. अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है ना, तो उसमें बिग फैन बस अब वापस भी आ रहा है वो. तो उसमें there is a conversation where he's asked by somebody who says that okay, you are this, you are that or whatever, and he says अच्छा, all this is because of the suit. If this suit is taken away, who are you, right? What is so? Majority of your life and work that you've done has been with Red Soul. That's your claim to fame. All of that. You're still an entrepreneur. अगर मैं एक सेकंड के लिए आपको बोलूँ कि आप कल सुबह से entrepreneur नहीं हैं, right? तो आप क्या हैं? How would Manasij wake up the next morning and who's he? Who are you without a suit? हाँ, मतलब Iron Man 1 में था सर ये सीन. हाँ, है ना? उसमें बोलता, उसका जवाब बहुत बेहतरीन है. He says, billionaire, playboy, philanthropist, genius. ये आपका जवाब तो नहीं है? नहीं. I am neither all of. इसमें से कुछ भी नहीं हूँ मैं. No, I'm not a billionaire, not a philanthropist, not playboy, definitely not a genius. ठीक है? In that order. But a great question, because क्या है ना कि entrepreneurship is so all engrossing and all encompassing. ये किसी और चीज के लिए जगह छोड़ता नहीं है यार. Like you are constantly 24 hours game on होता है. Right? Now, like I said at the very beginning, right? I always thought building startups and building dhanda is for people who are boring. And first person bias, I don't like to be a boring person, and I don't think I am. But so how do I do? What is my claim to not being boring? That's my answer to your point. Who are you without the entrepreneurial suit that you're carrying right now? Sir, I'm a drummer. Band, I drum for my band. That explains my long hair. ठीक है. I'm a writer. I wrote a book. Right. I also write a lot of party murder mysteries. Oh. This is very fun to do, by the way. 7-8 people get together, solve a murder mystery together. मेरी कहानियों में detection और forensics एकदम 100% accurate होता है, no loopholes. Wow. Okay. So that's second. I'm into cycling. So that's very important. I am into keeping fit. So I run a lot. That's very important. High pace running. So 15 minutes on a treadmill at 16 km per hour. So 4 किलोमीटर उसमें करना है और फिर एक 10 मिनट का करना है मेरे को plank with a 10 kg, on my back. Very clear, right? I am into books. I read a book a week. I'm a book apologist. I buy 10 times the more number of books I can read. I would recommend all of you to be book apologist and also buy my book. This is the fourth time I've said this, as you can see. मैं बाद में फोटो भी दिखा दूंगा आपको. That will be very nice of you. बिल्कुल. Anyway, so that's very important in my life. Music is supremely important. I spend a lot of time listening to music, and not the current beat of electronic generated music. I'm more the 80s, 90s, 70s purist form. Rock and metal. 20 years I've been following chess. This November 16th I'm going to Calcutta because top 10 chess players of the world are going to be there. I'm a big fan of cricket, football, Formula 1, World Rally Car, and cycling. So these things keep me busy all the time. Wow. Right? There is a huge part of me. If you want to tell me that there is no ZapScale in your life, I have a very rich life. Right? And I think it's supremely important that we don't put all our eggs into one basket. That way you will be an extremely boring person. You have one life. Everybody else is taken. Be yourself. ठीक है? Supremely important. Make sure that जब तुम अपनी जिंदगी देखो तो तुम्हें देखे कि क्या कहानियां थी इसमें यार. So that's my point. I think, and I said in the last paragraph of my book, कि यार I don't aspire to be the most rich person. ठीक है? Wealth is good, but in moderation I'm okay with that. I want to be somebody who has the most number of stories, engaging stories, fun stories, and therefore I am forever the economic class founder. That's my thesis on this. Wonderful. So on that note, the economy class founder is the book that everybody has to take. We'll put the details also for everybody's consumption. And I think it was a great conversation, Manasij, always. I think
many years later, but Yeah, it yeah. just felt that we just kind of took off from where we left. That's what happens now. Yeah, with fun people, it always, like you were always a witty guy. No, I think so are you, but it was absolutely amazing. I think great insights, people who are in the entrepreneurial journey at the early stage or are thinking of getting into one, they would find it very insightful, and all the very best for ZapScale. Sure, thank you very much. And guys, please subscribe to the channel. Yes. Like this video, share with your friends and family, watch it again and again, and of course, do check out the Kite Flyers. You know, they're amazing. All right, thank you so much. Lovely Great talking meeting you. to you. Cheers, guys. Bye-bye. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the episode as much as I did. I hope it gave you insights into the world of the entrepreneurship. It gave you an insight of what goes through the mind of an entrepreneur while he's building what he's building. For this and many more such exciting episodes, please do like, share, subscribe, and follow us. Do share this with your friends and family, and I will see you again very soon.